Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great and I'm doing great too. So I am back with another review of high tea. So I went to the Villa, the Grand Buffet for the high tea with my friend and I had an amazing experience. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खानों की. As you guys can see, there were a lot of variety of salads, as I'm showing you, and there were veggies, there were fish, एंड देयर वर लाइक का गोलगप्पों का अलग से एक स्टेशन था जहाँ पे आप अपना खुद से गोलगप्पे जो हैं वो रेडी करें. एंड देयर वर सुशी एंड आई ट्राइड सुशी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड लव इट. और यहाँ पे मैंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड किया है जहाँ पे ही वॉज मेकिंग इट लाइव एंड आई रियली लाइक इट. एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रो नहीं थी. इट वॉज बेसिकली कुक्ड. जो कच्ची सुशी होती है वो नहीं थी एंड इट वॉज डिलीशियस. और इसके बाद आगे क्यों नहीं जा रहे. यस, अब आगे हैं. आगे जो है डम्पलिंग्स थे. इट वॉज सो एंड एवरीथिंग वॉज सो ऑन पॉइंट एंड आई सो लव्ड इट. And the plus point is that they had a huge variety of Chinese, like मुझे नाम भी नहीं याद आ रही. And they had a huge variety of Italian. यहाँ पे आपको live pizza मिल रहा था. There were white sauce pasta. There were like grilled chicken, and there were like wings, veggies, everything was there and on point. And live कढ़ाई बन रही है. एंड बहुत सारी देसी डिशेस भी हैं. पुलाव है, दाल मखनी है, हलवा है, पूरियाँ हैं, बहुत कुछ था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना कुछ ट्राई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतना कुछ मेरे से ट्राई नहीं होता है. एंड देन आई रिग्रेट कि मैंने पैसे ज़ाया किए हैं क्योंकि मेरे से इतना कुछ तो हाई टी में खाया नहीं जा रहा है. बट यू गेट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स. ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट अबाउट विला इज़ कि ये बहुत बड़ा है और इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग कुजीन्स रखी हुई हैं. लाइक ऊपर वाले पोर्शन में दे हैड दैट चाइनीज़ और नीचे वाले पोर्शन में दे हैड इटालियन और साइड पे इन्होंने देसी रखा हुआ है कि लोग जो हैं वो चलते फिरते रहें और इनको खाना हज़म होता रहे. देन वी हैड दैट मीठा सेक्शन एंड वल्ला देयर वर सो मैनी डिशेस और मैंने एक भी ट्राई नहीं की क्योंकि मेरा पेट ही फुल हो गया था. एंड यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन भी है. There were popcorns, there were ice cream. We only had the ice cream in Mita, and I'm also attaching the picture of the bill. So you guys can know how much it cost us for two person. And if you are paying through the card, then per person will cost you like 2600. And if you are paying through the cash, then 3000 के roundabout होगा आपका bill. और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है and it was a wholesome experience. I loved it. I hope you guys loved it too.